So guys, proceed. She is bending the thick copper pipe to connect it with the outdoor unit. And see, he is bending with his hand without using the bender. ठीक है, पतला वाला इधर रहता है ना, अलग अलग ऐसा रहता है। हाँ वही तो बोल रहे, ये अलग डिस्चार्ज लाइन ही पतला वाला को बोलते हैं ना। फ्रिज में जो कंप्रेसर है और इसका कंप्रेसर में साइज में डिफरेंस रहता है, इसका बड़ा रहता होगा। बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। इसका काम अलग है, इसका काम पूरा अलग है। नहीं, कंप्रेसर का हम पूछ रहे हैं। कंप्रेसर पूरा अलग छोटा रहता है ना फ्रिज में, समझे बहुत छोटा है। ओहो, इसका एक हिस्सा है। तो उसमें कौन सा गैस यूज होता है फ्रिज वाला में? उसमें 134 है। 134, अच्छा 134 है, 600 नंबर है, सब अलग अलग है। उसमें मेनली चांस है कि लीक होने का कम संभावना, सब तो अंदर में है उसका कॉइल का। So the discharge line has also been connected to the outdoor unit of my brand new Panasonic AC. Outdoor and indoor unit has been installed in the new stand, and now only the wiring work is to be done. So I'll update you guys after some time. हम तो बोल रहे थे वो अलग लगता तो लगा देंगे, कहीं पर भी लग जाता सेफ्टी। क्या चीज? वो पाइप ना, वो फिर है ना, देखिए बड़ा रहता है ना वो लोग, ड्रेन का दोनों तरफ लगेगा बोलते ना, ड्रेन पाइप। So the wire is out. So Panasonic has not provided the main connection wire, so we have to buy additional 2.5 mm wire for the line and neutral. They have provided the long cable to connect the indoor unit to the outdoor unit, but they have not provided the cable to connect the wall socket to the plug of the indoor unit. So the wiring work is going on for the indoor unit. The blue wire you see is 2.5 mm and the green wire is the earth wire. And the black wire is the wire that connects the indoor to the outdoor unit.
line wire is getting connected. The blue wire you see is the line wire. So the indoor unit wiring work has been done. And now they have to connect the wire with the outdoor unit, this black wire, and that earthing wire will go to the main line. So we'll do the wiring of the main line. चाय पहले पी लीजिए, ठंडा हो जाएगा, है ना। कौन सा एलन की जा रहा है इसमें? 4 नंबर एलन की लगी है उसमें। 4। So guys is doing the leak test by opening the valve of the R32 refrigerant of our brand new Panasonic AC. कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं, ले कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। ले आइए और ले आइए ना, वहाँ पे है, आएगा तो मालूम चल जाएगा ना लीक कर रहा है। लीक चेक करना बहुत जरूरी है। हाँ तो कोई फायदा नहीं इतना काम करके। उधर ठीक है guys, it's not leaking, so the AC has been installed in a good condition.